Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. Welcome to the online lecture 2 of industrial pharmacy. In previous lecture, we have discussed the heat transfer by conduction method. Today, we will discuss the design of heating equipment, heat transfer by convection method, and radiation heat transfer. So let's start with the first topic, that is design of heating equipment. Consideration of the factors affecting heat transfer shows that a number of precautions must be observed in designing equipment for operations involving heating, especially when steam is the source of heat. अगर हम फैक्टर्स को देखें जो कि हीट ट्रांसफ़र को अफेक्ट करते हैं, तो उनको देखते हुए हमें नंबर ऑफ़ प्रिकॉशंस को देखना होता है या ऑब्ज़र्व करना होता है जब हम इक्विपमेंट डिज़ाइन कर रहे होते हैं ऐसे ऑपरेशंस के लिए जो कि हीट इन्वॉल्व करते हैं, स्पेशली जब स्टीम एज अ सोर्स ऑफ हीट यूटिलाइज़ की जा रही होती है. सो द फर्स्ट consideration is the area. Heating should take place over as large a surface area as possible. The second consideration is the temperature gradient. The third consideration is the material of construction, and the fourth consideration is general design. So, talking about the temperature gradient. A suitable temperature gradient should be employed, and theory suggests that this would be as great as possible, but this is not so in practice. First, many pharmaceutical substances are thermolabile and be damaged or destroyed by contact with the surface at higher temperature. Secondly, liquids boiling on a hot surface forms irregular streams of vapor bubbles, and because each stream originates from a point on the surface, this is called a nucleate boiling. Above a certain critical surface temperature, however, evolution of vapor is so rapid that it cannot escape, and the surface acquires a blanket of vapors which forms an additional resistance to heat transfer. This condition is known as film boiling. एक सूटेबल टेम्परेचर ग्रेडियंट एम्प्लॉय करना होता है, और थ्योरी ये कहती है कि जितना बड़ा टेम्परेचर ग्रेडियंट पॉसिबल हो सके उतना ही अच्छा है, बट प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल. उसके दो रीज़न्स हैं. पहला रीज़न फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि थर्मोलेबाइल इन नेचर होते हैं, और थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस डैमेज हो सकते हैं या डिस्ट्रॉय हो सकते हैं अगर हम उन्हें इन कांटेक्ट लेकर आए हायर टेम्परेचर्स के साथ. सेकेंड रीज़न लिक्विड बॉइलिंग है. हॉट सरफेस में इरेगुलर स्ट्रीम्स ऑफ वेपर बबल्स फॉर्म होते हैं, और हर एक स्ट्रीम ओरिजिनेट होती है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सरफेस. यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रीम ओरिजिनेट हो रही है एंड बबल्स आर फॉर्म्ड. दिस इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लिएट बॉइलिंग. एक सर्टन क्रिटिकल सरफेस टेम्परेचर के बाद एवोल्यूशन ऑफ वेपर्स स्टार्ट होती है, और ये बहुत रैपिड एवोल्यूशन होती है दैट वेपर्स कैन नॉट एक्चुअली एस्केप दिस सरफेस एरिया, और वो एक ब्लैंकेट फॉर्म कर लेते हैं विच फॉर्म्स एन एडिशनल रेजिस्टेंस टू हीट ट्रांसफ़र, और इस कंडीशन को हम फिल्म बॉइलिंग कहते हैं. The third consideration is material of construction. The plant should be made from materials of suitable thermal conductivity. And the fourth is an important one, which is general design. The design of the plant should be such that resistance due to surface layers are minimized. There are four considerations which are kept in mind while considering or designing a plant. The first one is air removal. Elimination of air as far as possible is of extreme importance. The second one is cleanliness. The surface of the vessel should be kept clean, and
free from deposits of solids or steel. The third important consideration is condensate removal. The system should be arranged to permit correct drainage and removal of the condensate formed as the steam gives up its heat. The fourth is the liquid circulation. Liquid movement should be arranged to ensure turbulent flow by avoiding awkward shapes where stagnation might occur, and using forced circulation if natural circulation due to density or viscosity changes is inadequate. The importance of this will be apparent if it is realized that if the velocity of the fluid is v, then when the flow is a streamline, heat transfer is proportional to v velocity of 0.33 times, while for turbulent flow the heat transfer is proportional to the velocity of 0.8 times. जनरल डिज़ाइन के अंदर चार चीज़ों को कंसिडर करना ज़रूरी होता है. एयर रिमूवल को, एयर की एलिमिनेशन एज़ फार एज़ पॉसिबल, जितनी ज़्यादा हो सके उसको एलिमिनेट करना इम्पॉर्टेंट है. सेकेंड इज़ क्लीनलीनेस. वेसल की सरफेस इस तरह की होनी चाहिए कि वो क्लीन रहे और डिपॉजिट सॉलिड्स का डिपॉजिट ना हो उसके ऊपर और स्टील डिपॉजिट ना हो. थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर कंडेंसेट रिमूवल का है. सिस्टम इस तरह से अरेंज हो कि वो परमिट कर सके करेक्ट ड्रेनेज को और कंडेंसेट रिमूवल को जैसे जैसे स्टीम अपनी हीट देती है. फोर्थ इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ लिक्विड सर्कुलेशन. लिक्विड मूवमेंट को इस तरह से अरेंज करना होता है ताकि टर्बुलेंट फ्लो को इंश्योर किया जा सके बाय अवॉइडिंग ऑकवर्ड शेप्स जहाँ पर स्टेगनेशन हो सकती है और जहाँ फोर्स सर्कुलेशन यूज़ नहीं की जा सकती. सो हमें इस तरह की लिक्विड सर्कुलेशन बनानी होती है या प्रोवाइड करनी होती है जहाँ पर फोर्स सर्कुलेशन यूज़ की जा सके अगर नेचुरल सर्कुलेशन ड्यू टू डेंसिटी या विस्कोसिटी इनएडिक्वेट हो. इसकी इम्पोर्टेंस इस तरह से है कि अगर फ्लूइड की वेलोसिटी v है तो जब फ्लो स्ट्रीमलाइन है हीट ट्रांसफ़र 0.33 टाइम्स ऑफ द वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, और अगर टर्बुलेंट फ्लो है तो हीट ट्रांसफ़र प्रोपोर्शनल है 0.8 टाइम्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड. So the next topic of today's lecture is heat transfer by convection. Let's first see what is the definition of convection. In convection, the heat flow results from mixing or turbulence, which can occur in fluids only. Convective heat transfer is the transfer of heat between two bodies or by currents of moving gas or fluids. In free convection, air or water moves away from the heated body as the warm air or water rises and is replaced by a cooler parcel of air or water. Convection में heat flow is the result from mixing or turbulence जो कि फ्लूइड्स के अंदर अकर होता है या गैसेस में अकर होता है. कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र एक्चुअली हीट ट्रांसफ़र है बिटवीन टू बॉडीज़ जो कि बाय करंट ट्रांसफरेंस हो रही है या मूविंग गैस या लिक्विड की मूवमेंट के थ्रू ट्रांसफ़र हो रही है. फ्री कन्वेक्शन के अंदर एयर या वाटर मूव करते हैं away from the heated body as the warm air or water rises and is replaced by a cooler parcel of air or water. Like here you can see in this diagram. Warm water rises with a convection current and cooler water descends. So how the heat is transferred through convection? When a fluid is heated from below, thermal expansion takes place. The lower layers of the fluids which are hotter becomes less dense,
we know that colder fluid is denser. Due to buoyancy, the less dense, hotter part of the fluid rises up, and the colder, denser fluid replaces it. This process is repeated when this part also gets heated and rises up to be replaced by the cooler upper layer. This is how the heat is transferred through convection. जब फ्लूइड को हीट किया जाता है फ्रॉम बिलो साइड, तो थर्मल एक्सपेंशन अकर होती है. लोअर लेयर्स ऑफ द फ्लूइड हॉटर होती हैं, ठीक है, और डेंसिटी हॉट फ्लूइड की कम होती है एज़ कम्पेयर टू द कोल्डर फ्लूइड. कोल्डर फ्लूइड या कोल्डर वाटर डाउनवर्ड मूव करता है और हॉटर फ्लूइड या हॉट वाटर अपवर्ड मूव करता है. हॉट वाटर की बैलेंसी की वजह से हॉटर पार्ट राइज अप होता है और कोल्डर या डेंसर पार्ट इस हॉट पार्ट को रिप्लेस कर लेता है डाउनवर्ड साइड पे. दिस होल प्रोसेस इज रिपीटेड until unless the whole liquid is heated completely. This is how the heat transfer is transferred through convection. So, what are the types of convection? There are two types of convection, and they are natural convection and forced convection. Natural convection is when convection takes place due to buoyant force, as there is a difference in densities caused by the difference in temperatures. It is known as natural convection. Examples of natural convection are oceanic winds. Forced convection, when external sources such as fans and pumps are used for creating induced convection, it is known as forced convection. Examples of forced convections are using water heaters or geysers for instant heating of water and using a fan on a hot summer day. दो टाइप की कन्वेक्शंस होती हैं, नेचुरल कन्वेक्शन और फोर्स्ड कन्वेक्शन. नेचुरल कन्वेक्शन मोस्टली अकर होती है बायंट फोर्सेस के थ्रू, यानी जहाँ पर डिफरेंस इन डेंसिटीज़ एग्जिस्ट करते हैं, और ये नेचुरल कन्वेक्शन डिफरेंस इन टेम्परेचर्स की वजह से और डिफरेंस इन डेंसिटीज़ की वजह से अकर होती है. फोर्स कन्वेक्शन उस वक्त हम कहते हैं जब हम एक्सटर्नल सोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, लाइक फैंस या पम्प्स को, फॉर क्रिएटिंग इंड्यूस कन्वेक्शन. इसकी एग्जांपल्स के अंदर वाटर हीटर्स आ जाते हैं, गीजर्स आ जाते हैं. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ हीट ट्रांसफ़र बाय रेडिएशन. Heat transmission by radiation occurs by energy transfer through the space by electromagnetic radiation. Does the hot body act as an emitter? The energy being transmitted through the intervening space to a receiving body, where it is absorbed and is manifested as heat. हीट ट्रांसफ़र बाय रेडिएशन उस वक्त अकर होती है जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है थ्रू स्पेस बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. हॉट बॉडी एक इमिटर का काम करती है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं. एनर्जी ट्रांसमिट होती है थ्रू इंटरवीनिंग स्पेसेस टू द रिसीविंग बॉडी, वेयर इट इज़ एब्जॉर्ब्ड एंड इज़ मैनिफेस्टेड एज हीट. A hot body emits energy in the form of electromagnetic waves. This radiation proceeding in all directions with virtually no loss to the intervening atmosphere. If it falls on another body, some of the radiation may be transmitted, some reflected and partly absorbed, and the relative proportions depending on the properties of the body. A black body is the perfect emitter and absorber, but all bodies radiate to some extent, the amount and the quantity of the emission being dependent upon the absolute temperature.
This can be summarized in three expressions, that is total energy, peak wavelength and intensity. एक हॉट बॉडी इमिट करती है एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ये रेडिएशन प्रोसीड करती हैं हर डायरेक्शन के अंदर विद वर्चुअली नो लॉस टू द इंटरवीनिंग एटमॉस्फेयर. अगर ये किसी बॉडी के ऊपर फॉल करती हैं तो इसमें से कुछ रेडिएशन ट्रांसमिट होती है, कुछ रिफ्लेक्ट होती है और कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है. और इसकी प्रोपोर्शंस या रिलेटिव प्रोपोर्शंस डिपेंड करते हैं जिस बॉडी के ऊपर रेडिएशन फॉल कर रही है उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर. एक ब्लैक बॉडी परफेक्ट इमिटर और एब्जॉर्बर होती है, लेकिन तमाम बॉडीज़ रेडिएट करती हैं टू सम एक्सटेंट, और उनकी अमाउंट और क्वांटिटी एमिशन की डिपेंड करती है उनके एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स के ऊपर. और इनको हम समराइज कर सकते हैं तीन एक्सप्रेशंस में, टोटल एनर्जी, पीक वेवलेंथ और इंटेंसिटी. सो व्हाट इज टोटल एनर्जी? द टोटल एनर्जी इमिटेड as E is given by E is directly proportional to 4 times of the temperature, where T is the absolute temperature. The emission is distributed in a spectrum between the wavelengths 1 to 100 micrometer, which is above the visible red, hence the commonly used term infrared. In practice, the useful wavelengths lies between 1 and 10 micrometer. टोटल एनर्जी को हम इस एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस कर सकते हैं. टोटल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 4 टाइम्स ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर. इस इमिशन को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एक स्पेक्ट्रम में जो कि वेवलेंथ फ्रॉम 1 to 100 माइक्रोमीटर में लाई करता है, जो कि मोस्टली अबव द विजिबल रेड रेंज है, जिसे हम कॉमनली इंफ्रारेड कहते हैं. इन प्रैक्टिस जो यूजफुल वेवलेंथ्स हैं वो लाई करती हैं बिटवीन 1 to 10 माइक्रोमीटर. द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर एक्सप्रेशन इज पीक वेवलेंथ. The emission of energy is not distributed uniformly over this band of the spectrum, there being a peak wavelength Z at which the intensity of radiation is greatest, and it can be expressed as Z is inversely proportional to the absolute temperature. So peak wavelength is inversely proportional to the absolute temperature. Here in this graph you can see that radiation intensity is higher with the peak wavelength, which is expressed in micrometer. The third expression is of intensity. Once more, the absolute temperature controls the intensity of the radiation I at the peak wavelength and is given by intensity of the radiation is directly proportional to 5 times of the absolute temperature. Thus, as the temperature of the emitter is raised, the total radiated energy is increased. The peak wavelength becomes shorter because it is inversely proportional to the absolute temperature, and the radiation of the peak wavelength is of greater intensity. एब्सोल्यूट टेम्परेचर कंट्रोल करता है इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन को और पीक वेवलेंथ को, जो कि एक्चुअली इंटेंसिटी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 5 टाइम्स ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर. सो जैसे टेम्परेचर इमिटर का रेज होता है तो टोटल रेडिएटेड एनर्जी इंक्रीज़ होती है और पीक वेवलेंथ शॉर्टर होती जाती है, और रेडिएशन ऑफ द पीक वेवलेंथ इज़ ऑफ ग्रेटर इंटेंसिटी. रेडिएशन पीक वेवलेंथ की ग्रेटर इंटेंसिटी की होती है. Use of radiant heat transmission in pharmaceuticals. The character of radiant energy means that when used in practice for heat transfer, the heating effect depends upon the temperature of the emitter and the absorption into the material to be heated. Forms of emitter include infrared lamps, in which the filament operates at approximately 1000 degrees Celsius, giving a peak wavelength of about 1 micrometer, and ceramic rods or panels heated by gas or electricity.
The later works at lower temperatures, usually from 800 degrees Celsius down to 500 degrees Celsius, with peak wavelengths between 4 and 5 micrometer. This means that the later may be preferable uh, when pharmaceutical materials that are thermolabile and likely to be affected by the greater intensity of emission of the infrared lamp are involved. A special feature of this form of heat transmission is that the radiant energy penetrates a short distance 1 to 2 millimeter into materials so that the heating effect occurs below the surface. This property can be of considerable importance where the material is being heated in thin layer of films, for example in a film of solution being dried by radiant heat, where the energy will pass through the film and be absorbed into the supporting medium. Hence, the film is being heated from below outwards, thus possibly avoiding the surface skin, which can retard the drying process when convection methods are used. Absorption of the energy to a substance will depend on the properties of the material, but in general, more energy will be absorbed into dark colored, opaque, rough surface media and least into light colored, transparent and smooth surfaces. रेडियंट एनर्जी का कैरेक्टर से मतलब ये है कि जब रेडियंट एनर्जी यूज़ होगी प्रैक्टिस में हीट ट्रांसफ़र के लिए, तो हीटिंग इफ़ेक्ट डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर, इमिटर के टेम्परेचर के ऊपर, और उसकी एब्जॉर्प्शन कितनी हो सकती है मटेरियल के अंदर जिसको हीट किया जा रहा है. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इमिटर्स यूज़ किए जाते हैं फॉर द हीटिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस, जिनमें इंफ्रारेड लैम्प्स भी हैं, जिनमें फिलामेंट ऑपरेट करता है अप्रॉक्सीमेटली 1000 डिग्री सेल्सियस पे, और ये 1000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पीक वेवलेंथ देता है फॉर अबाउट 1 माइक्रोमीटर. इसके अलावा सिरेमिक रॉड्स और पैनल्स, हीटेड पैनल्स यूज़ होते हैं. वो हीटेड पैनल्स जिन्हें गैस से हीट किया जाता है या इलेक्ट्रिसिटी से हीट किया जाता है. सिरेमिक रॉड्स या हीटेड पैनल्स जो गैस या इलेक्ट्रिसिटी से हीट होते हैं वो लोअर टेम्परेचर्स देते हैं, यूजुअली 800 डिग्री सेल्सियस से लेकर 500 डिग्री सेल्सियस तक, और उनकी पीक वेवलेंथ वेरी करती है बिटवीन 4 to 5 माइक्रोमीटर. इसी वजह से सिरेमिक रॉड्स या हीटेड पैनल्स को प्रेफर किया जाता है फार्मास्यूटिकल मटीरियल्स को जब हीट किया जाता है, मोस्टली उन फार्मास्यूटिकल मटीरियल्स को जो थर्मोलेबाइल हैं और जो लाइटली अफेक्ट होते हैं ग्रेटर इंटेंसिटी ऑफ एमिशन से इंफ्रारेड लैम्प की. एक स्पेशल फीचर है इस फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसमिशन में जहाँ पर रेडिएंट एनर्जी पेनिट्रेट करती है शॉर्ट डिस्टेंस तक मटेरियल्स में, ताकि हीटिंग इफेक्ट बिलो द सरफेस हो सके. इस प्रॉपर्टी को कंसिडरेबल इम्पोर्टेंस दी जाती है जहाँ पर मटेरियल्स जो कि हीट किए जा रहे हैं वो थिन लेयर ऑफ फिल्म्स में हीट किए जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एक सॉल्यूशन की फिल्म जिसे ड्राई किया जाता है बाय रेडिएंट हीट, जहाँ पर एनर्जी पास होगी फिल्म से और एब्जॉर्ब होगी सपोर्टिंग मीडियम में. इसी वजह से फिल्म जो हीट की जा रही है वो फ्रॉम बिलो आउटवर्ड हीट की जाती है. दस पॉसिबली ये अवॉइड किया जाता है कि सरफेस स्किन जो फिल्म की है वो रिटार्ड ना हो जाए ड्राइंग प्रोसेस के थ्रू जब कन्वेक्शन मेथड्स यूज़ किए जाते हैं. एब्जॉर्प्शन ऑफ द एनर्जी सब्सटेंस में डिपेंड करती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल पर, बट जनरल ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होती है डार्क कलर्ड ओपेक और रफ सरफेस मीडिया में, और कम एनर्जी एब्जॉर्ब होती है लाइट कलर ट्रांसपेरेंट और स्मूथ सरफेस के अंदर. This is the end of this lecture and this chapter as well. In the next lecture we will discuss mass transfer. Thank you for patiently listening to this lecture. For your queries use HULMS or we can discuss it in the physical class as well. Allah Hafiz.